Sir, we may start now. Yes. So a very good evening to everyone. I'm Deepak, Managing Director for WEFA India. I welcome you all to today's webinar on attention to emotion, an initiative by I'm the Best Mom. So the month of October is about spreading the awareness, and with this 10th of October for the Mental Health Wellbeing Day, dyslexia and ADHD been the efforts are going on across the globe for the better awareness, and which is growing rapidly, but there are differences in understanding and its representation, particularly when it comes to ADHD or it is hyperactivity. And today we will be, we are extremely honored to have you, Dr. Deepak Gupta, with us today. And I'm very thankful to the attendees for joining. So we will be sharing a very short video with this. So today, probably we will be hearing from Dr. Deepak Gupta everything which we all need to know about ADHD. So Dr. Deepak is carrying more than 20 years of clinical experience with So Dr. Deepak Gupta is the founder and director to Center for Child and Adolescent Wellbeing, CCAW, senior consultant at Sir Gangaram Hospital, President Appreciation Award from the Delhi Medical Association, Eminent Medical Person Award from Delhi Medical Association. He has been the President Delhi Psychiatry Society from 2014-16, trained at the Maudsley King's College London, UK, with a diploma in child and adolescent psychiatry. Further, Sir has been trained and a facilitator on the children, particularly with special care. Dan and MedMap US, fellow doctor working with the children with special needs, with a special area of interest with autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, which we are going to be enlightened with his learning and experience, and the psychological trauma with the children, and been an author to various books, chapters in the national and international publications. So Dr. Deepak Gupta, we will be grateful. Please take up the session from your side, sir. Yeah, good evening, everyone. First of all, I'm very thankful to I Am the Best Mom for organizing this talk. We are in a special month, October month, a festival month, but simultaneously a month of awareness. A month of awareness of ADHD, dyslexia, mental health. It's a month of awareness about so many things. And today we'll be talking about ADHD. So in next few minutes, I'll be talking about briefly about what is ADHD is. And then we can open for question and answers. Correct? So that's what we will take it further from here. Make sense? Now, a lot of people ask me, what is ADHD? ADHD है क्या? क्या होता है ADHD? ADHD में होता क्या है? What happens in ADHD? Now the $1 million question is that, is ADHD just an hyperactivity? No. ADHD is a disorder. ADHD is a disorder which is a biological origin. इसका मतलब ये नहीं कि every hyperactivity is ADHD. No, it's not like that. It's not like that. So there has to be a reason. So ADHD एक brain disorder है, neurodevelopmental disorder है, जहाँ पे the child has hyperactivity and symptoms of inattention and impulsivity. So a lot of people ask me, my child is overactive, is he ADHD? My child is hyperactive, is he ADHD? Maybe or may not be. So every child who's overactive is not ADHD. That is very important. And how we differentiate, we'll talk about it. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं 3 साल के, 4 साल के, 6 साल के कि सर ये ओवर एक्टिव बच्चा है, क्या इसको ADHD है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा. So there we need to evaluate the child.
We have to assess the child and then decide whether this child has ADHD or not. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ADHD होता क्या है। तो ADHD is a neurodevelopmental disorder जो बचपन में शुरू होता है. Usually the symptoms start before the age of 5 years, 6 years, 7 years. And then it goes on through the school years. Correct? DSM-5 की क्लासिफिकेशन तो 2013 में आई थी, 2013 में वो कहती है the symptoms should be present before the age of 12 years. That is very, very important. First thing. Second thing, important है जो symptoms of ADHD है वो घर में भी प्रेजेंट होने चाहिए और स्कूल में भी प्रेजेंट होने चाहिए, और उसकी वजह से घर में भी दिक्कत होनी चाहिए और स्कूल में भी दिक्कत होनी चाहिए. करेक्ट? और अगर सिर्फ दिक्कत घर में हो रही है तो वो शायद हो सकता है ADHD ना हो, वो कुछ और हो सकता है. घर में कलेश हो रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है. या बच्चे को सिर्फ स्कूल में दिक्कत होती है, मे बी उसको लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, डिस्लेक्सिया हो सकता है, इसलिए उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट होता है, छेड़खानी करता है, बच्चों को तंग करता है. दैट इज व्हाट. इसीलिए जब भी कोई बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होता है हाइपर एक्टिविटी से या पुअर स्कूल परफॉर्मेंस से या स्कूल कंप्लेंट से, तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है. हमारा मकसद लेबल देना नहीं है कि लेबल दे दिया जी ADHD है, नहीं. हमारा मतलब है बच्चे को और परिवार को समझना, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द फैमिली एंड टू देन वर्क विद द फैमिली, टू वर्क विद द चाइल्ड with the right treatment and the right approach. That is important. ये बहुत important है. तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए, क्योंकि बहुत लोग ADHD के नाम से घबरा भी जाते हैं. माय गॉड, मेरे बच्चे को ADHD है. नहीं, अगर आपके बच्चे को ADHD है भी तो उसका पूरा इलाज है. याद रखिए, ADHD बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं. उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है. बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, माइकल फेल्प, उसेन बोल्ट, वो भी उनको भी ADHD था, लेकिन उनकी एनर्जी एक तरह चैनलाइज हुई और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करे. तो बहुत लोग मुझसे मजाक में पूछते हैं, सर ADHD से क्या होगा मेरे बच्चे को? मैं कहता हूं भगवान ने आपको एक्स्ट्रा बैटरी दी आपके बच्चे को, उसका फायदा उठाओ. अब कैसे फायदा उठाना है, तो वहां पे बहुत बार हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है. करेक्ट? तो अब देखा जाए कि ADHD के लक्षण क्या होते हैं. 3 लक्षण: इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिविटी. इनअटेंशन का मतलब, if the child is not able to concentrate and get distracted easily, keeps on making careless mistakes, is not able to complete his task and homework, is need frequent reminders, goes into daydreaming, not disorganized, keeps on losing his stuff, forgetfulness, and wants to run away from studies or any work जहां पे ध्यान लगाना हो, तो इसका मतलब उस बच्चे को ADHD में इनअटेंशन के सिम्टम्स हैं. कमिंग टू हाइपर एक्टिविटी, बड़ा चंचल है, टिक के नहीं बैठता, क्लास में घूमता रहेगा, लाइन में सीधा खड़ा नहीं हो सकता, कभी इधर कभी इधर, बहुत ज्यादा बोलता है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, थकता ही नहीं है. एक पेरेंट आया, बोला सर इसके तो थकता ही नहीं, हम थक जाते हैं, कुछ करो, इसकी बैटरी तो फ्यूज करो, कुछ तो करो इस बच्चे का. 11 बजे 12 बजे भी हम थक के सो जाते हैं, बच्चा नहीं थकता. तो एक्स्ट्रा एनर्जी, कीप ऑन टॉकिंग, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े अकलमंद के क्वेश्चंस होते हैं, ये बेतुकी क्वेश्चन नहीं पूछते, रेलिवेंट क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. माँ बाप कहते हैं हम तो थक गए, इतना बोलता है, इतना क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बैंक है पूरा बच्चा मेरा. मैं कहता हूँ शुक्र मनाओ, आपसे पूछ तो रहा है बच्चा आपका. अगर आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? नहीं तो गूगल पे जाएगा इस उम्र में, नहीं तो नेट पे जाएगा इस उम्र में, 6 साल में 7 साल में, फिर और सारी इंफॉर्मेशन आएंगी. तो अगर आप जवाब नहीं दोगे तो सबसे बढ़िया कौन जवाब देगा? दैट्स व्हाट. तो इतना ज्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है. फिर तीसरा लक्षण है इंपल्सिविटी का, कि उनमें सब्र नहीं होता, वो अपनी टर्न के लिए वेट नहीं कर पाते. कोई बात कर रहा होगा तो बीच में आके इंटरप्ट करेंगे, मम्मी 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 क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, मम्मी मुझे सुनो पहले, मम्मी प्लीज प्लीज. मैम किसी और से क्वेश्चन पूछेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे. दैट्स व्हाट. So they cannot wait for their turn, they blurt out answer and they are very impatient.
तो 3 तरह के ADHD होते हैं। ADHD जिसके अंदर इनअटेंशन के सिम्टम्स सबसे ज्यादा होते हैं, जिसको बोलते हैं ADHD प्रीडोमिनेंटली इनअटेंशन टाइप। इसको लूज टर्म में ADD भी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अक्सर देखा गया लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है, जिनको डे ड्रीमर ही बोलते हैं। डे ड्रीमर, अपने ख्यालों में खो जाना और ख्यालों में खो के फैंटासाइज करना और भूल जाना क्या काम किया था या क्या काम दिया गया था उनको, ADD। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी वाला, बहुत चंचल वाले, जो अक्सर लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा कंबाइंड टाइप, इनअटेंशन भी और हाइपर एक्टिव इंपल्सिव, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो ये 3 तरह की ADHD है। ADHD प्रीडोमिनेंटली इनअटेंशन, ADHD प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इंपल्सिव एंड ADHD कंबाइंड टाइप। तो इस तरह का अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, लेकिन इनअटेंशन के जो सिम्टम्स है वो अक्सर चलते रहते हैं। और जब वो एडोलेसेंस में आते हैं तो वो इनअटेंशन के सिम्टम्स और एडोलेसेंट में जो इंपल्सिविटी होती है वो मिलके इन बच्चों को तंग ज्यादा करती है। इसलिए कभी कभी एडोलेसेंस में आके बच्चों को दिक्कत ज्यादा होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर ADHD बच्चों को लोग टोका टाकी बहुत करते हैं, उनको लेबल्स बहुत लगाते हैं, शरारती है, नॉटी है, उद्यमी है, परेशान करता रहता है, तंग कर रखा है हमारे को। तो उसकी वजह से ये बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, कुछ भी कर लो मैं तो यही करूंगा, फिर अगर मैं ऐसा हूं तो चाची, मामा, नानी, दादा, दादी सब परेशान, वो हमारे घर में क्यों आ गया, मत लाओ इसको हमारे घर में, तंग करता रहता है, टिक के नहीं बैठता, शादी में इधर उधर भागता रहेगा, हर चीज को गिराता रहेगा, क्लास में तंग करता रहेगा। दैट्स व्हाट। इसलिए इन बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, बिकॉज इतने चंचल होते हैं, इनको नींद की प्रॉब्लम्स रहती है, स्लीप प्रॉब्लम्स रहती है। इसलिए इनको हर कोई टोकता रहता है तो ये बदतमीज बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। जवाब, उल्टे जवाब देना। अगर आपने बोला नॉर्थ तो बोलेंगे साउथ, जो भी आप बोलोगे उसका उल्टा करेंगे, करेक्ट, क्योंकि इनको लगता है कोई हमें समझता ही नहीं है। मेरे 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया इन बच्चों के साथ काम करते हुए। इन 24 सालों में सबसे कॉमन चीज जो मैंने देखी है, जो बच्चे बोलते हैं कि हमें तो कोई समझता ही नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। सर कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, हमें तो कोई समझता नहीं है, सब हमारे पीछे पड़े रहते हैं। यही हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। यही सबसे बड़ी पेरेंट काउंसलिंग है कि बच्चे को समझो और बच्चे के साथ काम करो मिलके, बच्चे को जीतो, बच्चे को हराना नहीं है। अगर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी उसकी ताकत बनाओ, उसको डेफिसिट नहीं उसका एसेट बनाओ। भगवान ने आपको बच्चा दिया, इंटेलिजेंट बच्चा जिसमें एक्स्ट्रा बैटरी है, उसका फायदा उठाओ, उसको डिफ्यूज मत करो, उसको फ्यूज आउट मत करो, उसको स्पार्क मत करो, उसको यूज करो। करेक्ट, ये हमें करना है, अगली चीज है। करेक्ट। बहुत लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को ADHD क्यों हो गया, हमारी वजह से हुआ है, मैं सिंगल पेरेंट हूं या टू मच ऑफ टीवी दिखाया इसकी वजह से हुआ। नहीं, ADHD सिंगल पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता, ADHD घर में कलेश की वजह से भी नहीं होता, ADHD टू मच ऑफ टीवी की वजह से भी नहीं होता। ADHD के पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है। हमारे ब्रेन में कुछ एरियाज होते हैं जिनके अंदर केमिकल लोचा हो जाता है। वो जो केमिकल लोचा होता है उसकी वजह से एक केमिकल होता है डोपामीन, उस डोपामीन के अंदर ऑल्ट्रेशन हो जाती है, और वो जो डोपामीन में ऑल्ट्रेशन होती है उसकी वजह से ये बच्चे सही वक्त पे सही ब्रेक नहीं लगा पाते। ये मेरी अपनी भाषा है, ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। तो वो सही वक्त पे सही ब्रेक नहीं लगा पाते, तो केमिकल लोचा हुआ, डोपामीन ऑल्टर हो गया, ऑल्टर होने के बाद सही वक्त पे सही ब्रेक नहीं लगा पाते, इसलिए वो परेशानियों में फंसते रहते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, अभी क्या भूल गए, नेक्स्ट, अभी क्या, फिर नेक्स्ट, दैट्स व्हाट। तो वो अंदर रिटेन नहीं कर पाते कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो सोच नहीं पाते कि ये करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। दैट्स व्हाट हैपेंस, इसलिए हो जाता है। इसलिए हमें इन बच्चों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे पास बच्चा रेफर होकर आता है, अगर हम अब ट्रीटमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो जब बच्चा रेफर होकर आता है तो हमें पहले उसका डायग्नोज करना होता है कि सच्ची में ADHD है या नहीं है। जब डायग्नोज कर लेते हैं उसके बाद
हम माँ बाप को एजुकेट करते हैं, पेरेंट को साइको एजुकेट करना पड़ता है कि ये ADHD है, ये इलाज होगा, ऐसे काम किया जाएगा। जिन बच्चों को माइल्ड ADHD होता है उसमें दवाई यूज नहीं करी जाती। माइल्ड टू मॉडरेट ADHD में वी डोंट यूज मेडिकेशन, ओनली इन मॉडरेट टू सीवियर ADHD वी यूज मेडिकेशन। अदरवाइज पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर काउंसलिंग या बिहेवियर थेरेपी या पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर स्कूल वालों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है कि स्कूल में बच्चे को कैसे डील किया जाए। फिर बच्चे के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करी जाती है, उसकी डाइट के अंदर उसको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो ओमेगा 3 है ना, अलग अलग सप्लीमेंट, आयरन, इन बच्चों में बहुत आयरन और फेरेटिन डेफिशिएंसी होती है, आयरन लेवल लो होता है, फेरेटिन लेवल लो होता है, तो उसको ठीक किया जाता है। इनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक लो होता है, उसको ठीक किया जाता है। तो उन सब चीजों से अक्सर इन बच्चों को देखा जाए वो बहुत प्रोसेस फूड्स बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, उनको डाइट को चेंज किया जाता है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन की जाती है, सप्लीमेंट्स को दिया जाता है, ओमेगा 3, आयरन लेवल को बढ़ाया जाता है, जिंक को, मैग्नीशियम को बढ़ाया जाता है, एल कार्नोसिन दिया जाता है। उसके बाद इनकी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाई जाती है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से भी गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, करेक्ट, डोपामिन भी रिलीज होता है उससे, करेक्ट। एक उसके बाद अगर मॉडरेट टू सीवियर ADHD है तो उन बच्चों को स्पेसिफिक दवाई दी जाती है। बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत लोगों का मिथ्या होती है कि साइकेट्रिस्ट ने एक बार दवाई शुरू कर दी तो दवाई जिंदगी भर चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। दवाई को कम से कम 1 साल दिया जाता है और उसके बाद दवाई को बंद किया जाता है। दवाई देने से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। हमें बच्चों को स्लो नहीं करना, हमें बच्चों को और अच्छा करना है। मैं पेरेंट्स को कहता हूं, अगर दवाई से बच्चों को फायदा नहीं हो रहा तो बंद कर दो। हमारा मकसद है बच्चे को और अच्छा करना, बच्चे को इंप्रूव करना, बच्चे को डल नहीं करना है, बच्चे को स्लो नहीं करना है, बच्चे को पोटेंशियल को एनहांस करना है, करेक्ट, दैट्स व्हाट। ये हमें इस तरह करना है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा ड्राउजी हो जाएगा, डल हो जाएगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन अगर आप कोई सी भी पैरासिटामोल दवाई भी ले लो, हर दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर के साथ मिलजुल के काम करोगे तो आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि बिफोर आई ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, कि ADHD का पूरा इलाज है, सही वक्त पे उसका डायग्नोस करिए, जितना जल्दी उतना बेहतर। अगर सही वक्त पे हम ADHD का डायग्नोस करेंगे, द अर्लियर यू डायग्नोस इट द बेटर इट इज। Once you diagnose, put them onto treatment. Treatment includes working with the family, working with the school, working with the child, working on the diet, supplements, including omega-3, correct, if required. Plus, if it is moderate to severe ADHD, then we have to use medication. Medication is not for lifelong, it is for at least 1 year. And after that, we have to do a close review and then we have to take it forward. But in the end, I will say the children with ADHD have a lot of energy, very creative, very charming, very funny, very social, a lot of enthusiasm. So let's take advantage of these children with ADHD, because there's always a bright side to ADHD, and that's where all the shiny things are. So with these few words, I will open it now for the question answers. We have another 15 minutes to take question answers. We can take it. Thank you very much. God bless us all. Thank you. Thank you so much, Dr. Deepak. Now, when you were saying the incidents are also increasing, and particularly we are going through a difficult time, which was like nobody has experienced earlier time. And I'm pretty sure you are also seeing a lot of challenges these days because the children are into the limited environment. Sir, any recent or maybe with your clinical interaction with any other parents, how the kids are behaving to and managing? Because this is ADHD, something, first of all, we should be knowing as a parent, whether the child is really ADHD or how we can find out. Sometimes we see the lot of aggression from the children. Should we conclude that my child is getting into ADHD? No. ADHD symptoms will be from childhood. If the child who was doing very well suddenly becomes aggressive, that is not ADHD. Correct? That could be he must be emotionally disturbed. Something must be bothering him. He must be fed up living in the four walls during the lockdown. He wants to go out and meet his friends. Parent must be nagging him. Parent must be too much after him because he must be a single child. उसी चार दीवारी के अंदर बार बार पेरेंट्स उसके पीछे पड़े रहते हैं, कर कर कर. So he's fed up. So if a child becomes aggressive, defiant,
upset, that does not mean he has ADHD. ADHD symptom starts from childhood and they goes on from childhood, and it is present even at home and at school both. Sir, you said this is a biological alteration, and we are also getting a question on the same line. Does it also affect with some kind of reverse with the vaccination? No, it has nothing. It is ADHD has not been associated with any vaccine injury. Correct? There has been other neurodevelopmental disorders where people have talked about vaccine injury, but with ADHD, no, people have not talked about. People have not talked about ADHD, this thing. But if there's some case reports are there, it could be there. But yes, vaccine and vaccine injury has not been linked to ADHD. So there is a question coming from Doctor. My son is a very hyperactive, but very good in studies. We both are working parents. We are unable to give a lot of time, but after office, I'm giving time, but his father is so much into his life. Is there any chance of having ADHD with the child? See, your working and non-working does not cause ADHD. Your husband doesn't have a time or have time does not cause ADHD. That can cause aversion to parents, or he can become rebellion, or he can become defiance, or he may start hating you, or he may not spend time with you. That's a different story. But that is not ADHD. Correct? So you have to understand, everything you can't put to ADHD. But yes, if you feel you're not giving enough time, your husband is too busy, that's okay. That is the priority of your husband. For him, that priority is his work. That's okay. But you as a mother, if you think giving time is important, please invest in your child. Don't worry about your husband. आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करिए. अब ये मत सोचिए वो दिन आएगा जब हस्बैंड जागेंगे और मेरे बच्चे को टाइम देंगे. नहीं. You start investing in your child. The biggest investment in your child is spending time with your child, talking to your child, which always is A, B, C. A, acknowledge your child, appreciate your child. B, be calm and vigilant with your child. And C, connect, communicate and coach your child. अगर आप ये तीन चीज अपने बच्चे के साथ लगातार करते हैं और आपका बच्चा आपकी टॉप प्रायोरिटी है, you can easily make a difference in a child's life. If you keep on looking, your husband will support, you will go into blame game. And neither ना आप करोगे ना वो करेंगे. और बच्चा अपने आप बड़ा हो जाएगा और 18 साल के बाद घर छोड़ के चला जाएगा कॉलेज. फाइल बंद. Sir, at times, there is another question coming in one of the city where there is practically no child psychiatrist. It's a small town in Maharashtra. And the question comes, we believe there is a need of a counseling. Is there any way we can reach out to you? So that's the question. Absolutely. लॉकडाउन में तो हमने बहुत ऑनलाइन सेशंस करे हैं. हम तो बहुत ऑनलाइन सेशंस करते हैं. आज देखो, आज भी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं. तो हम जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू. आपसे पहले भी मैं स्काइप पे, आपसे पहले भी मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे सेशन कर रहा था. अलाउड है. आप मेरे असिस्टेंट को कांटेक्ट करिए, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे और पूरा प्रोसेस चलता रहेगा. You can always contact my assistant, Mr. Sandeep. He will take care of you. Sir, another question coming. Will it be a hereditary? Yes. ADHD में hereditary के बहुत chances होते हैं. अक्सर देखा गया कि it runs in families. It runs in families. It is more common in boys. Correct? और ये देखा गया कि अक्सर जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मुझसे पूछो तो यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं कि यस, मैं भी बचपन में बहुत शरारती था, ये इसका चाचा बहुत शरारती है, ये था, ये इसका मामा बहुत शरारती था. तो इट रन्स इन फैमिलीज. तो ADHD is well known to run in families. It has a very strong hereditary predisposition. So, sir, the question is, ADHD and autism, are they comorbid? Yes. बहुत अच्छा सवाल है आपका, जिसने भी पूछा है. ऑटिज्म और ADHD एक साथ चल सकता है. पहले क्या था, 2013 से पहले, before 2013, if autism and ADHD symptoms were there, then we used to say no, only autism. Now the new classification says both can be diagnosed together. ADHD and autism both can be diagnosed together. Clear? Now, अगर बच्चों को सिर्फ ADHD है
तो ट्रीटमेंट इंटरवेंशन ज्यादा आसान होती है। अगर हमारे बच्चे को ADHD और ऑटिज्म दोनों है, so we have more challenges, क्योंकि हमें ऑटिज्म को भी एड्रेस करना है और ADHD को भी एड्रेस करना है। Got it? That's what. Now, coming to a child like who is concentration is a big issue. The attention span is very low, and that too when the child is already a teenager. So the question is how to increase the concentration power in a 14-year-old child. अलग अलग लेवल में। पहला लेवल है आप बच्चे का न्यूट्रिशन इंप्रूव करिए, बच्चे का न्यूट्रिशन इंप्रूव करिए, उस कोशिश करिए उसका प्रोसेस फूड, पैकेज फूड्स, प्रिजर्व फूड्स उनको कम से कम करिए, उसको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, करेक्ट। उससे और ऐसी डाइट जिसके अंदर आयरन हो, जिसके अंदर ओमेगा हो, जिसके अंदर बैलेंस डाइट हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो, तो गिव हिम अ गुड डाइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, बच्चे की योगा और एक्सरसाइज बढ़ाइए अगर बढ़ा सकते हैं, योगा और एक्सरसाइज। थर्ड चीज, अक्सर देखा गया इन बहुत सारे बच्चों का फेरिटिन लेवल लो होता है, आयरन लेवल लो होता है, मैग्नीशियम जिंक लेवल लो होता है, इनको ओमेगा 3 की जरूरत होती है। तो अगर हम इनको आयरन देते हैं, ओमेगा 3 देते हैं, करेक्ट, उससे भी इन बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होती है। फोर्थ, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, करेक्ट। वो एक्सरसाइज उनको बोलते हैं अटेंशन एनहांसमेंट टास्क। जैसे एक बिंदु पे 5 मिनट तक देखना, या एक न्यूज़पेपर पे कैंसिलेशन टास्क, सारे न्यूज़पेपर पे सारे ए कैंसिल करना, canceling all the A or all the B on a big newspaper sheet, correct? So all this improves the attention span. Plus फिर कुछ कंप्यूटराइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी है, कैप्टन्स लॉक करके है, कंप्यूटराइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, न्यूरो फीडबैक्स हैं, उनसे भी बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता है। तो ये सारी चीज की जा सकती हैं। अगर उसके बाद भी बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो बच्चे को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर बच्चे की थेरेपी करनी पड़ेगी। कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ कॉग्निटिव टेक्निक्स होती हैं, उससे बच्चे को इंप्रूव किया जा सकता है। और अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो बच्चे को मेडिसिन दी जाती है, जिससे बच्चे का टेंशन स्पैन इंप्रूव होता है, अगर उसको सच्ची में ADHD है और इनअटेंशन टाइप वाला है। बट जो मैंने पहली 5 बातें बताई हैं, डाइट की, योगा एक्सरसाइज वाली, इंप्रूविंग द फेरेटिन लेवल्स, ओमेगा 3, मैग्नीशियम एंड जिंक लेवल्स, करेक्ट, साथ में उसके साथ अटेंशन एनहांसमेंट टास्क करना, जिसमें कैंसिलेशन टास्क है या किसी डॉट पे फोकस करके करना, और 5वां कंप्यूटराइज ट्रेनिंग देना, इनसे काफी बच्चों के अटेंशन कंसंट्रेशन काफी इंप्रूव कर जाती है। Thanks, sir. Now, if we do not address the challenge of ADHD at an early age, how threatful it will be with the child in a adolescent or even at adult age? देखिए, अगर आपने बचपन में एड्रेस किया तो क्या होगा, 1/3 बच्चे जो ठीक हो जाते हैं 6-7 साल की उम्र तक या 8 साल की उम्र तक, क्योंकि ब्रेन में एक थ्योरी होती है मैच्योरेशन लैग की। द ब्रेन टेंड्स टू हैव अ डिले ऑफ 1 to 3 years in the brain, in the brain development, and because there is a maturation lag, the brain tends to pick it up. So around 30%, 1/3 of children tend to pick it up, and by the age of 7 to 8 years they're out of ADHD. The rest of the kids continue to have ADHD symptoms, and when they reach to adolescence, so ADHD symptoms plus adolescent is a deadly combination, very lethal combination. तो फिर क्या होता है, ये they are more distracted, their academic grades goes away, they get distracted from the studies, they go into bad companies, they get into troubles, and that's what happens. इसीलिए हमें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और इंटरवीन करना बहुत जरूरी है, उससे पहले बच्चे में दिक्कत आए। Would it be possible to do this analysis with a early age like 2.5 years, or is there an age parameter where you can do a evaluation of ADHD? Yes, usually by the age of 4 to 5 years. The guidelines, जो latest guidelines आई हैं American Academy of Pediatrics की, any child beyond the age of 4 years who have symptoms of hyperactivity, impulsivity, and attention should be evaluated for ADHD. Correct? That's what. तो 4 साल से beyond किसी भी बच्चे को दिक्कत है। और मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, शायद एक क्वेश्चन फ्लैश किया था कि आप ADHD और ऑटिज्म को डिफरेंशिएट बड़ी आसानी से कर सकते हो। बहुत सिंपल है। See, autism kid, the child will not have an eye contact in autism. No eye contact, lost in his own world, pinpoint नहीं करेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, self-absorbed, finger flickering, flapping,
obsessed with one pen, particular things, these are autism. ADHD, hyperactivity, restlessness, inattention, distractible, concentration issues. That is ADHD. तो ऑटिज्म ADHD को डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं है और बहुत बार दोनों सिम्टम्स दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं. लेकिन अगर आपको अपने बच्चे में दिक्कत है तो प्लीज टेक हिम टू अ प्रोफेशनल हेल्प and get it diagnosed. There is a question coming. What are the frontline intervention for a child who is diagnosed ADHD? If it is mild to moderate ADHD, the front line is parent training program and behavior therapy. The front line, single. And if it is moderate to severe ADHD, the front line is medication, simple, in one line. So mild to moderate, the front line is behavior therapy, parent training program. In moderate to severe, the front line is medication, pharmacotherapy. Very simple, in one line. That is as per the various guidelines by the American Academy of Pediatrics, Indian Academy of Pediatrics, Indian Psychiatric Society, whether it's Canadian guidelines, whether it's NICE guidelines, all these multiple guidelines says mild to moderate. The first line is parent training program. Sir, the incidents are increasing. Is it because of the awareness has increased? Or literally the children are going through a lot of anxiety or maybe behavioral changes, or maybe, as you said, the biological alteration is happening quite a lot? See, there are multiple theories. And one of the theories is that, yes, people are getting more and more awareness about it. Like through this platform, we are reaching to so many people. Same way, multiple awareness programs are happening across the country, across the world. So much is coming on the media, so many documentaries are coming, so many movies are coming about it. So yes, people are opening out that yes, we have ADHD, depression, multiple things. So yes, one thing is that awareness. Second thing is better diagnosis. Now diagnosis, better facilities are there. Before people were not aware of it, how to diagnose. Now we have a specific criteria are there, specific scales are there. So one is better awareness and second is better diagnosis. But people also believe that there are other multiple theories also of increase in ADHD, and that is called epigenetics. Epigenetics. That means they have a genetic vulnerability, but because of environmental factors like toxins, chemicals, pollutants, those things tends to add on with this genetic vulnerability factor and tends to, and one of them is lead sisa, that is very, very well known. So all these things add along with genetic vulnerability leads to symptoms of ADHD. So epigenetics is something which is random, which is very rampantly coming up, and people are talking about, yes, multiple factors are there which can cause it. Thanks, sir. There's a gentleman writing, my kid is 2.5 years and seems to have autism spectrum. Any suggestion, please? Hence, he is too young to obey or to be handled. So how best we can manage, and if at all they have to reach out to you? See, the thing is that 2.5-year-old autism means you need to take immediate professional help. Whether you come to me or whether you go to any other expert, please take immediate help and they will guide you. And that is what is important. You want to reach me, you can always contact my assistant, Mr. Sandeep, on 417-333-40. They will help you out and help you. It's on my website. It's on my website also. But simultaneously, please immediately take help. The earlier you help, the better it is. आप 1.5 साल के बच्चों के 1.5 साल के बच्चों में भी काम कर सकते हो. 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 1.25 साल के. So the earlier you do, the better it is. Thank you so much, sir. As we are going forward, I'm sure maybe time is a constraint. 8:10 was your, you have some other assignments, sir. So thank you so much for addressing all these questions. And I would also request the attendees, if they have any subsequent queries, they can send us an email or phone number. If they can call us up. And as a part of our initiative and the Best Mom, what Dr. Deepak Gupta is also sharing, it is very important when we are raising our kid, it is our own responsibility to build the generation as well. 2.5 million children getting born every week, and we are expecting by another 5 years' time, the population is going to be around 2 billion worldwide. And this is something where we have to have our highest interest involved.
And when it comes to managing children as a whole, three things as I could gather from your suggestion, sir: appreciate, acknowledge, and also be a part of them, be a great coach to them, be a great friend to them. And I believe ADHD is something which parents should not be worried at all. This can be handled. That's what I believe the parents are looking forward to hear from you. Yes. If you suspect, please take a professional help. The earlier you do it, the better it is. And remember, ADHD is fully treatable. Fully treatable. And yes, don't worry, we are always there for you to work with you. Thank you very much. God bless us all. Namaste. Thank you. Thank you so much, sir. Have a good night. Thank you all the attendees.